हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ लैंग्वेज एंड जेंडर। लैंग्वेज एंड जेंडर के ऊपर बात करेंगे। सोशल लिंग्विस्टिक्स में एक निहायत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है लैंग्वेज एंड जेंडर का। सो इसके ऊपर डिस्कशन कर लेंगे। सो लेट्स बिगिन लैंग्वेज एंड जेंडर। सो ये बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है और इसके अंदर सब टॉपिक्स भी आ जाते हैं, उनको भी सेपरेटली मैं डिस्कस कर लूँगा। हाउ वीमेन लैंग्वेज इज़ डिफरेंट फ्रॉम द डेट ऑफ लैंग्वेज ऑफ मैन, वो भी हम देखेंगे। सो ये तमाम चीज़ें आ जाती है जी इस ब्रॉडर कैटेगरी, अंडर द कैटेगरी ऑफ लैंग्वेज एंड जेंडर। सो लेट्स बिगिन लैंग्वेज एंड जेंडर। इसमें किस चीज़ के बारे में बात की जाती है? इट एक्सप्लोर्स हाउ लैंग्वेज वेरीज इन जेंडर, कि जेंडर, डिफरेंट जेंडर में लैंग्वेज किस तरह वेरी करती है, ये डिस्कस की जाती है इस टॉपिक के अंदर। सो ऑब्वियसली जेंडर टू होती है, मेल एंड फीमेल, मस्कुलिन एंड फेमिनिन, right? So it investigates the varieties of speech associated with a particular gender, or it may be concerned with the psychological, social, cultural differences between men and women. So sexist language कहा जाता है which deals with gender, ठीक है? Language and gender deals with sexist language. So it refers to representation of men and women unequally, कि मेन और वीमेन की लैंग्वेज किस तरह वेरी करती है, और हाउ दे आर रिप्रेजेंटेड अनइक्वली। लिंग्विस्टिक इनइक्वालिटी के नाम से एक टॉपिक भी है, वो भी मैं कवर अप कर लूँगा, राइट? सो सोशल लिंग्विस्ट दे स्टडी करते हैं कि हाउ द यूज़ ऑफ लैंग्वेज वेरीज इन जेंडर, कि मेल किस तरह लैंग्वेज यूज़ करते हैं, फीमेल्स किस तरह लैंग्वेज यूज़ करते हैं, एंड दे ड्रा सम जनरलाइजेशन दैट some generalization you are familiar with, that girls enjoy talk, they talk more, whereas the boys, they are hopeless communicators, means they speak less, right? So here are some these are some generalizations related to gender. So we will discuss what is the relationship between language and gender, के बीच में क्या relationship होती है. So it refers to the language of male and female, and in the language community the pronunciation is regarded as sign of sex. So pronunciation, obviously उनकी speech different होती है, male and females की, उनकी pronunciation, उनकी the pitch of sound and all of these voice qualities वो भी vary करती है. So we associate these with gender. Language varies in gender in terms of speech, pronunciation, vocabulary, writing, as well as in the style of communication. Not only the language varies in orally, but written में भी आपको difference मिलेगा men and female की language में. So ये difference क्यों आ जाती है? Why this difference is exist in gender? जेंडर में ये लैंग्वेज की डिफरेंस क्यों होती है? सो ऑब्वियसली बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी है, द ट्रेट्स, द बायोलॉजिकल फैक्टर्स, द ट्रेट्स दैट डिटरमिन. फॉर एग्जांपल मेल्स में दैट हाई लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन होती है, जिसकी वजह से मैन एग्रेसिव होता है, एंड दिस एग्रेसिवनेस इज रिफ्लेक्टेड इन देयर स्पीच, इन देयर यूज ऑफ लैंग्वेज. जबकि फीमेल्स यूज़ ऑफ लैंग्वेज में सॉफ्ट होती है, एग्रेसिव नहीं होती. सो कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी है, बट वी विल बी फोकसिंग ऑन द सोशल फैक्टर्स, क्योंकि हम सोशल लिंग्विस्टिक्स डिस्कस कर रहे हैं, तो हम लोग सोशल फैक्टर्स पे फोकस करेंगे. सो it tells us that how the social factors shape the language that we use, and हम देखेंगे ये सोशल इंटरेक्शन मेल की, मेल फीमेल की अपनी सोशल सर्कल होती है, द वे दे इंटरेक्ट विद द पीपल इट वेरीज. सो देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ द लैंग्वेज दे यूज़. So the people around you, obviously they influence you, the people you interact with, obviously it also influence your language. So linguistic behavior, gender influences the linguistic behavior.
So the way people use language can be related to social network they belong to, their habitual activities and their identities and social status, वो भी affect करता है. So Holmes, a social linguist, or in his study, he has formulated 6 assumptions regarding language and gender के related. उसने कुछ assumptions पेश किए हैं जो कि ये है कि and he has observed that there is a different pattern of language use in gender. Women tend to focus more on the affective function of language, of interaction, whereas women tend to use linguistic devices that stress solidarity more often than men do. And in formal contexts, men tend to interact in the ways that will maintain and increase their power and status. आगे हम अप्रोचेस और थियोरीज को भी डिस्कस कर लेंगे जो इससे रिलेटेड है कि द मेन यूज लैंग्वेज इन सच अ वे टू शो देयर डोमिनेंस एंड वीमेन यूज मोर स्टैंडर्ड फॉर्म. सो ये तमाम डिफरेंसेस भी हम देखेंगे मेल एंड फीमेल लैंग्वेज में. डिफरेंस सेपरेट वीडियो के अंदर देखेंगे कि हाउ क्या कौन कौन से डिफरेंस है, हाउ दे यूज लैंग्वेज in gender. So there are some theories, approaches related to language and gender. So the first one, this is the oldest and the first one approach, and it is the deficit approach. ये क्या कहता है? Deficit approach जो है social linguist थी एक female Lakoff, right? In her work language and women's place, उनकी एक work है writing है language and women's place, जिसमें वो ये अप्रोच को डिस्कस करती है. एंड शी एस्टेब्लिश्ड वुमेन लैंग्वेज कैरेक्टराइज्ड बाय एग्जैजरेटेड इंटोनेशन एंड वुमेन लैंग्वेज इज. सो बेसिकली डिफिसिट नाम से ही पता चलता है कि द वुमेन लैंग्वेज इज deficient in some characters or features. Women language is treated as a weak and unassertive, right? So it suggests that the women talk if there is a weakness in their language, or you can say women language is lacking in some form. और दूसरी अप्रोच आ जाती है जी dominance approach, and this approach was suggested by Pamela Fishman. और ये मॉडल नाम से ही पता चलता है डोमिनेंस की बात करता है, कह रहा है कि मेन यूज़ ऑफ लैंग्वेज डोमिनेट करते हैं. मेल अपने यूज़ ऑफ लैंग्वेज को इस तरह यूज़ करते हैं कि दे ट्राई टू डोमिनेट ओवर द फीमेल सेक्स, एंड men use language to exert their power and maintain their dominance in a society. And language of men, it holds more power than that of women. And the third approach is difference approach, and it says that male and female really do converse differently. Yes, obviously they do. Male और female की language, use of language different होती है. Distinct in terms of they have distinct voices, psychology, experiences, social, they have different social circles, social interactions. Obviously differences there, but there is difference, but this doesn't mean that one is superior over the other, and neither gender is superior. And the fourth one is social constructionist approach. So this is the latest model, and it is more practical and applicable theory, and it says that gender identity is seen as a social construct. ये कह रहा है कि जेंडर आइडेंटिटी सोशल कंस्ट्रक्ट होती है. सोसाइटी हमें जेंडर एस्क्राइब करती है, सोशल फंक्शन हमें देती है कि एक जेंडर को किस तरह बिहेव करना चाहिए, जेंडर को लैंग्वेज किस तरह यूज़ करना चाहिए. सो जेंडर इज़ कंस्ट्रक्टेड थ्रू आवर यूज़ ऑफ लैंग्वेज एंड अ रोल दैट सोसाइटी एक्सपेक्ट अस. ठीक है, जो सोसाइटी हमसे एक्सपेक्ट करता है, जो रोल हमें दे देता है, सो हमें उसके अकॉर्डिंगली लैंग्वेज यूज़ करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करना चाहिए. सोशल कंस्ट्रक्ट ना सोसाइटी ने हमें एस्क्राइब किया हुआ ये चीज़ है. एंड सोसाइटी एंड सोशलाइजेशन दैट अफेक्ट आवर लैंग्वेज. और उसके अलावा एक और थ्योरी इसके अंडर ही आ जाती है जो इस थ्योरी को सपोर्ट करती है, दैट इज़ कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस थ्योरी. इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग लिंग्विस्टिक बिहेवियर.
लिंग्विस्टिक बिहेवियर को समझने में हमारी मदद करती है। एंड इट आल्सो सजेस्ट दैट जेंडर इज सोशली कंस्ट्रक्टेड इन इंटरेक्शन। ये भी ये सजेस्ट करती है कि जेंडर जो है सोशल कंस्ट्रक्ट है। एंड इट सपोर्ट्स द आइडिया दैट द वे वी यूज लैंग्वेज इज लर्न फ्रॉम द पीपल अराउंड अस। उसके अलावा कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि मेन एंड वीमेन स्पीच डिफर, वो डिफर करती है बिकॉज यू नो वी आर ब्रॉट अप डिफरेंटली, वी हैव डिफरेंट रोल्स इन द सोसाइटी एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स आर देयर। And apart from that, social experiences, social structure, social status, education level as well, and different learning styles. So all these factors contribute to difference in use of language. इन तमाम factors की वजह से male and female language में difference आ जाती है. In the next video I will discuss how male and female language varies. So this is all about today's video. Thank you for watching.